Now we will solve one more example of rank coefficient of correlation. This is the problem based on the topic that when the number of observations repeated 2 or 3 times, or when the rank is repeated 2 or 3 times. So how we will solve the problem? Let us start rank R1. So first rank, for which one is the maximum value? The maximum value is 21. Number 1. Then 20. Number 2. After that 19. Number 3. After that 18. Number 4. After that 18, and then 15, and 15 is repeated 2 times. So 4 तक मैंने रैंक दिया है. व्हाट विल बी माई नेक्स्ट रैंक? इस 15 को मैं कितना रैंक दूंगी? 5th पोजीशन. और इस 15 को मैं कितना रैंक दूंगी? 6 पोजीशंस. बट ऐसे देना नहीं है हमें, बिकॉज बोथ आर द सेम वैल्यूज़. मैं कैसे करूँगी? मैं रफ में जाऊँगी. फिर 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज़ 11 बाय 2 इज़ इक्वल टू 5.5. तो मैं कितना दोनों को रैंक दे दूँगी? 15 और 15 को 5.2, 5.5 एंड 5.5. डन. आफ्टर दैट देन 15 इज़ फिनिश्ड. आफ्टर द नाउ नेक्स्ट रैंक इज़ नेक्स्ट पोजिशन इज़ 14. नाउ व्हाट आई हैव डन, मेरा 5th और 6th हो गया है. 14 को मैं नंबर 7 दूँगी. डन. यहाँ पे याद रखिए 5th एंड 6th एंड 14 को मेरा रैंक जो जाएगा वो 7 जाएगा. आफ्टर 14 13 रैंक इज़ देयर, एंड अगेन 13 इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स. 7 तक मैंने एंड किया. ये कितना होगा? 8th. और ये कितना होगा? 9th. नाउ अगेन 8 + 9 अपॉन 2, 7/2 is equal to 8.5. So I am giving 8.5 here and 8.5 to this one. And last is 8 and last, not last, after that 8 and 9, and last one is 12, that is 10th. 9 तक मेरा रैंकिंग हो गया था, 12 को मैं 10th दे रही हूँ. Similarly we will go to the rank number 2. So maximum value here is 25. 1, then 22, 2, after that 3, 21, 3, then 20, 1, 2, 3. 3 रैंक दिया. ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, और ये 6th पोजीशन. So how we will 4 + 5 + 6. This time 1, 2, 3. Number of positions are 3, so divided by 3. 11 and 15 divided by 3 is equal to 5. So we will give the rank 25, 25 and 5. डन. आफ्टर नाउ टिल 6 तक मैंने फिनिश किया. नेक्स्ट 6 मेरा आएगा 18, और 18 को मैं रैंक दूंगी 7. देन आफ्टर 18 16, 8, 7, सॉरी 18 के बाद 17, 8, then 16, 5, sorry, then 16, 9, and last one is 15 is 10. Done. So in this way we will give rank to the position if the position or number of observations are repeated. After that D R1 minus R2. 10 minus 1 is 9. 5.5 minus 3 is 2.5. Minus 1.5 minus 5, 0.5 minus 1, 2, minus 0.5 minus 4 and 2. D square. 81, 6.25, 2.25, 25, 0.25, 1, 4, 0.25, 16 and 4. Your answer is summation D square is equal to 140. Now we will solve the
repetitions, repetition factor. First of all, number 1. In the position number 1, we have started with 15. 15 as rank 15 repeated 2 times. So we will take m is equal to 2 and we will put the formula m square minus 1 upon 12. This is the standard formula for the repetition. 2 square minus 1 upon 12, 2 4 minus 1 upon 12, 2 3 upon 12, 0.5. सेकेंड कौन सा नंबर रिपीट किया? 13 ऑल्सो रिपीटेड 2 टाइम्स. 13 रिपीटेड, नंबर 13 रिपीटेड 2 टाइम्स. अगेन m इज इक्वल टू 2. ये फिर से हम करेंगे पुट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 और आपका आंसर फिर से कितना आ जाएगा? 0.5. एज ओके, आई विल सॉल्व. m के प्लेस पे मैं फिर से 2 लिखूँगी. 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12. सारा का सारा ये चीज़ और आप सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा? 0.5. इन द नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट, विच नंबर इज रिपीटेड? 16 repeated 2 times again. Done. So wait a minute students, I think 15 and 15, and at third time the 16 I have, which number is repeated in the second line? 20 repeated 3 times. Got it? Yes, 20 repeated 3 times. Now your m is equal to 3. So solve m square minus 1 upon 12. 3 square minus 1 is equal to 12. 3 9 minus 1 is equal to 12 is equal to 3 8 upon 12, 24 upon 12, and last answer is equal to 2. Done. Now we will find CF, that is called correction factor. Add all the repeated answers we have got. So first we have the result 0.5. After that again we have the result 0.5 and last one is 2. So the CF factor is equal to 3. In the repetition formula we need to find CF, correction factor. After that our formula become, for the repetition method, our formula become R is equal to 1 minus 6 bracket start summation d square plus CF bracket close upon n square minus 1. 1 minus 6, your summation d square is 140 plus CF is 3, n again 10 observations were there. 1 minus 6 into 143 upon 10, 100 minus 1. 1 minus 643 is equal to 858 upon 9, 90, 100 minus 90 and 1 minus. Then it is 0.8667 and 1 minus is 0.1333 is your answer.